Hello students, today we are going to discuss the question Shakespeare as a writer of sonnets. It is a very commonly asked question in your exams and you should know how to answer it properly. Let us start with some factual or general information about Shakespeare's sonnets. Shakespeare is believed to have written 154 sonnets which were published as a sequence in 1609. Sonnet originated in 14th century Italy and reached England in 16th century during Renaissance. Shakespeare experimented with the form of Italian sonnet, and his sonnets today are considered to be one of the best writings in this form. शेक्सपियर ने अपना सॉनेट सीक्वेंस डार्क लेडी और फेयर यूथ को डेडिकेट किया. The fair youth is probably the patron of Shakespeare, Henry Wriothesley, the Earl of Southampton. And the dark lady was called so because perhaps Shakespeare did not want to reveal the identity of this woman. 16th सेंचुरी और एलिज़ाबेथन टाइम्स में सॉनेट्स को लव पोएम्स के फॉर्म में लिखा जाता था, इसलिए शेक्सपियर की सॉनेट्स में भी डोमिनेटिंग थीम लव है. शेक्सपियर सॉनेट्स आर मेनली लव पोएम्स विच एक्सप्लोर द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड ब्यूटी एंड टाइम एंड लव. This was the introduction of your answer. Now you will have to point-wise explain the characteristics of Shakespeare's sonnets. So the first point is, sonnets are philosophical in nature. The sonnets of Shakespeare reveal the philosophy of the poet regarding love and life in general. Shakespearean sonnets are written in first person and are therefore very personal in nature. The poet has expressed his views about love, friendship, youth, and decay, the relationship between body and spirit in the sonnets. Poet ने अपनी sonnets में love, friendship, youth इन सब topics पर बात की है. His special focus, जो उनका एक स्पेशल फोकस रहा है सारे सॉनेट्स में, दैट इज़ एफिमेरल नेचर ऑफ ब्यूटी. एफिमेरल नेचर ऑफ ब्यूटी मीन्स द शॉर्ट लिव्ड नेचर ऑफ ब्यूटी. हाउ टाइम रैवेजेस ब्यूटी, कैसे टाइम के साथ जो है ब्यूटी वो ख़त्म हो जाती है. ही हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ टाइम ऑल्सो अफेक्ट्स लव. टाइम और लव का क्या रिलेशनशिप है वो भी पोएट ने अपने सॉनेट्स में हमें बताया है. सो वन ऑफ द प्राइम कंसर्न्स ऑफ शेक्सपियर्स डेलिबरेशंस इन हिज सॉनेट्स इज हाउ टू प्रिजर्व ब्यूटी फ्रॉम द ऑनस्लॉट्स ऑफ टाइम. द सॉनेट सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ इज बेस्ड ऑन दिस थीम. आई विल रिपीट अगेन, आपको हर पॉइंट में आप जो भी क्लेम कर रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई एग्जाम्पल लिखना है. वो चाहे किसी सॉनेट का नाम भी हो सकता है या फिर आप सॉनेट की लाइंस भी जो है आंसर में कोट कर सकते हो. द नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर आर लव पोएम्स. In the 16th century, sonnets were generally considered to be vehicles of love. एक जो predominating theme आपको सारी sonnets में शेक्सपियर के देखने को मिलती है वो क्या है? Love. And he has dealt with different aspects of love in his sonnets. Shakespeare, in his sonnets, has deliberated on the nature of beauty and love and how the two are affected by time. For instance, in the sonnet Let Me Not to the Marriage of True Minds, the poet
ponders upon what is true love and emphasizes the permanence of true love. He says, love is not love which alters when alteration finds. Now we are going to discuss the images and metaphors which were used by Shakespeare in his sonnets. जैसा कि हमने पहले भी जो है पढ़ा कि 16th सेंचुरी में सॉनेट्स को एज सीक्वेंस लिखा जाता था. बहुत सारी सॉनेट्स जो है एक कलेक्शन में एक साथ पब्लिश होती थी, एंड दीज सॉनेट्स वर इंटरकनेक्टेड थ्रू recurring images and metaphors. Shakespeare sonnet also appear as a sequence of 154 with interrelated themes, metaphors and images. Although सारी sonnets अपने आप में जो है individual entities थी, अगर आप उनको individually पढ़ो then also they would make a lot of sense, but in a group when read in interrelated manner they would make more sense, present a more whole of the ideas of Shakespeare. The images that were used in the sonnets of Shakespeare are reflective of the Renaissance spirit. Renaissance में बहुत सारे नई discoveries हो रही थी, inventions हो रहे थे, and the thinking minds, they were very influenced by the things, the developments happening around them. बहुत सारे developments nautical field में हुए थे. Compass was created for the first time. Big boats were constructed for the first time. So nautical imagery was one of the major forms of imagery that was used at the time of Renaissance. A very good example of the nautical imagery can be from Sonnet 116, where Shakespeare presents before us an image of a tempestuous sea to show the steadfastness of true love in the face of the problems and hardships in life. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. We also encounter a lot of nature imagery in his sonnets. Since the sonnets depict various moods of love, all kinds of nature images are employed to create a suitable emotional response in the reader. Beauty is often associated with flowers, summer's honey breath, and all things delicate and fragile. On the other hand, time is associated with all things harsh and corrosive. Then the next characteristic of Shakespeare's sonnets is that we find time as a recurrent motif in the sonnets. We often find Shakespeare preoccupied with the destructive nature of time. शेक्सपियर ने अपनी बहुत सी सॉनेट्स में टाइम को ऐसे प्रोजेक्ट किया है कि वो सबसे शक्तिशाली होता है और जो भी उसके सामने आता है वो उसको डिस्ट्रॉय करता चला जाता है. सो फॉर हिम टाइम इज एन अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर whose power is unmatched by any other thing on this earth. In sonnet number 65, since brass nor stone nor earth, we find the poet deliberating on the effect of time on beauty and how can beauty be immortalized. In the sonnet he laments, how with this rage shall beauty hold a plea whose action is no stronger than a flower. In sonnet number 116, Shakespeare in a beautiful image asserts that true love has the power of evading the brutalities of time. He says, love is not
time's fool, and love alters not with his brief hours and weeks. So now we are going to discuss the structure of Shakespearean sonnet. Sonnet was introduced in England in the 16th century by Sir Thomas White and Henry Howard. They had largely followed the Petrarchan or Italian form of sonnet. जब सर थॉमस वाइट और हेनरी हावर्ड ने अपनी बुक में सॉनेट्स इंट्रोड्यूस करी थी इंग्लैंड में, तो उन्होंने इटालियन फॉर्म को ही फॉलो किया था. और इटालियन फॉर्म क्या था? द सोनेट वाज डिवाइडेड इनटू 2 स्टैंजास. पूरी सोनेट जो है वो 2 स्टैंजास में डिवाइड होती थी. फर्स्ट स्टैंजा वाज कंपोज्ड ऑफ 8 लाइंस जिसको हम ऑक्टेव कहते हैं, और जो सेकेंड स्टैंजा था दैट वाज कंपोज्ड ऑफ 6 लाइंस जिसको कि सेस्टेट कहा जाता था. बट शेक्सपियर डिड नॉट फाइंड दिस स्ट्रक्चर टू बी सूटेड टू हिज टेस्ट. शेक्सपियर जिस टाइप के इमोशंस सोनेट के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहते थे, उनको ऐसा लगा कि ये जो पेट्रार्कन फॉर्म है सोनेट का, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई करके वो क्या हो गया? ही डिवाइडेड द सोनेट इनटू 3 स्टैंजास of 4 lines each, which were known as quartets, and in the end there was a concluding couplet. All these lines were written in iambic pentameter. और शेक्सपियरन सोनेट की जो राइम स्कीम थी वो होती थी AB AB CD CD EF EF G G. क्योंकि ये मॉडिफिकेशंस शेक्सपियर ने किए थे सोनेट फॉर्म में, इसीलिए हम इस फॉर्म को सोनेट की शेक्सपियरन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट कहते हैं. Then you can end your answer with a suitable conclusion. This is how you are going to structure your answer. I hope you found this video useful, and wishing you all the best for your exams. For more such content, keep watching, stay tuned. Have a good day.